I've sent the link to you all in the group. Yeah. So hear it Yeah. out and see if you want to use any part of it or the idea in it, because I feel we can uh, utilize a popular bhajan for assigning the homework. So when you people give me your inputs on it, I will be able to frame the homework question. But Depending on here what. I feel there are different types of pain that was experienced, physical pain, emotional or mental pain Not also. only that, So anybody and everybody whom you treat, Everybody is in pain. everyone, yeah, yeah. even somebody like Ravan who thought no end of himself, Mm, or Sita who was Sati Savitri, or Ram who was a Bhagwan avatar, mm, नानक दुखिया तो सब संसार. परशुराम से लेके एक सिंपल वुमन से लेके माता सीता से लेके रावण तक जो है, everybody कोई say, कितना भी uh, पावरफुल हो, भगवान का स्वरूप हो या एक ऑर्डिनरी इंसान हो, Human has एवरीवन yeah. इज इन पेन. mm, Even Lord Indra, like all Bhagwan Ram भी human incarnation थे, so that explains human में आ गया तो pain है. Lord Indra also from time to time he suffers great pain. He's driven from his Indra lok by Rakshasas. He goes या running to all the gods, big gods. All the Rakshasas also have great pain. They are forever wanting boons. कि मेरे को अमर बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ. So who is there who We doesn't do not have want to talk pain? about the other yonis here because that would be confusing. We'll only talk about human. Hmm. So all have pain. मैम, ये जो लास्ट स्लाइड है ना हमारा, जहाँ पे वी विल हैव दैट वन स्लाइड और हम बोलेंगे Human. द ह्यूमन, हाँ, ह्यूमन इज रजस डोमिनेंट, और वो ह्यूमन का फोटो दो दिखा के उसके क्वालिटीज लिखेंगे, एक्शन ओरिएंटेड, Yeah. एग्रेशन और ये सब. वो उसके अच्छा बाद वर्ड्स रजस के. उसके बाद कुछ बोलेंगे नहीं हम हाँ, उसके कि ह्यूमन फॉर्म इज और ये चला पेनफुल और हम सब देंगे. सफर, हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं. उसके बाद ये भजन लगाते हैं. ये बहुत लंबा है, तो इसका कोई शॉर्टर वर्जन मिलता है तो देख लेना. हाँ, उसको मैं एक वीडियो एडिट कर दूंगी, एक नहीं छोटा नहीं, क्लिप. आई थिंक यू विल फाइंड समथिंग. अच्छा. मैंने भी सर्च किया तो पहले तो 2 घंटे का मिला, Oh. फिर और थोड़ा छोटा, और ये 14 मिनट का है. तो सर्च अ लिटिल मोर, यू विल फाइंड जस्ट हाँ. 4 लाइन का अगर भजन. डाल जितना सकें. वर्ड्स है उतना ही होगा. हाँ. हम्म. mm, ये इतना वो गा गा के करते हैं इसलिए वो राम 4. के साथ में. हाँ. हाँ. हाँ, ये जो वो वर्ड्स जो दिख रहे थे हमको जब भी सुन रहे थे उसके साथ में होगा तो ही समझ में आएगा. सिर्फ भजन को ये लोग सुनेंगे तो उसमें से नहीं समझ आएगा. हाँ, ये पंजाबी में है ना. मेरे को इसलिए भी अच्छा लगा कि इसमें लिरिक्स लिखे हुए हम्म. थे. हाँ, आजकल इंग्लिश भी ट्रांसलेट पढ़ मिल सकते हैं. जाता है यूट्यूब we पे. could read it, Yeah. yeah. we we could play a part of it, just 4 lines, appropriate 4 lines, and वो रावण का पार्ट जो आया था ना उसमें, इवन द 10 हेडेड रावण ही ऑल्सो फील्ड पेन एंड सीता ऑल्सो फील्ड पेन. Mm, वो पार्ट को हम लोग स्क्रीन पे उसका वो तो स्लाइड में ही रख सकते हैं और एक पिक लेके, और वो वी कैन प्ले इफ वी कुड देखो क्या क्या दैट कर 4 लाइन. सकते, क्रिएटिव. देयर इज लॉट ऑफ स्कोप. The Karikas are only on creation. Yeah. So good chance for you people Surabhi, to when create you also. put the whole जब भी सुरभि ने, I'm asking, I want to ask Surabhi, when you put that, what do you feel pain? What do you do? What were you thinking of when you put that, supposedly, when that thought came to you? 4 lines क्यों लिखे? बिकॉज आई फील एक्चुअली हम लोग सब बहुत बार हमको लगता है कि हम बहुत प्लेजर में इंडल्ज करने की कोशिश करें, एंड ऑल आवर एफर्ट इज ऑलवेज टू गो टुवर्ड्स प्लेजर. एक्चुअली वो मैं स्लाइड बना रही थी उसके एक दिन पहले ही
वी ऑल हैड एन ऑफिस आउटिंग, तो हम लोग सब बाहर गए थे। बाहर गए, ऑब्वियसली यू डोंट गेट द काइंड ऑफ फूड जो घर पे आप खाते हो। फिर दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा बाहर जाना कुछ काम का है ही नहीं। जाने से पहले लग रहा था कि नहीं, बहुत दिनों बाद आउटिंग हो रहा है, चलो आज तो सब मिलेंगे, मजा आ जाएगा। बट नेक्स्ट डे लगा नहीं, चलो अच्छा है, अगली बार घर पे मिलते हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आया। तो देन आई रियलाइज दैट ऑल आर परस्यूट, it's always a pursuit of happiness. We are always running in that pursuit. That itself is pain. There's actually a movie by that name. That pursuit Yes, itself is pain. हाँ, और itself वो is pain. परस्यूट में हम करते रहते हैं, हम सोचते हैं हमको ये वस्तु मिलेगी, हम खुश हो जाएंगे, वस्तु लेके आते हैं, 2 दिन खुश होते हैं, तीसरे दिन वही वस्तु नहीं तकलीफ होती। देती है. हाँ, First you possess things, then things possess you. Hmm. तो ये When you say, Surabhi, say. no, so this pursuit of happiness is like that mrugajal, na? Is a proof. हाँ, Why are you pursuing happiness? Because you know you're not happy. Because you have pain. and all your life you are not happy, so this pursuit goes on throughout your life. ऐसा नहीं है कि खाली यंग एज में 2 साल परस्यूट किया और फिर सब मिल गया और पूरा जीवन फिर तुम खुश हो, फिर कुछ नहीं, जरूरत नहीं है कुछ करने की, ऐसा तो होता नहीं है कभी। The reality No, is that we get pleasure in remaining in the pain. If you take the pain away now, a person, most of us won't know what to do actually. तड़प जाएंगे कि oh, there's nothing else to latch on to. All this what from pleasure is pain. But being in that pain also is a kind of a pleasure. We prolong that. Humans prolong that. Rajasic, that change. Then momentary I- pleasure, and then you want that to linger. So even the pain itself, the we like to be in pain, but are we aware of pain? Our We homework are not will be aware. around this awareness only. but without that little pain, there's no progress. Yeah. Pain is Correct. only Yeah. leads So to we progress. need it. Yeah. Yeah. For change, you need pain. And change is pain. Yeah. We want to actually experience pain. If you see now, we are looking for worries. For example, a family member, let's say your son, doesn't come home inside the house by 9 o'clock. Oh, where is he? Where is he? He's walking around, he's able to walk. Still, oh, he hasn't come. I'm worried. Like, this is just an example. Even for our own self, I'll give you an example. Itna garmi hai, if presented, actually, if we could do this in the class, it would be brilliant. When it's very hot, you put all the fans off and you have a glass of water and you put a glass of very chilled Nimbu pani. I will guarantee that each of us, when you go there, you will search out a reason to establish that Nimbu pani is very healthy for you. You have lost minerals and that's why you're choosing it. Actually, you like that cool, sweet taste going down your tongue and throat. That is the real reason, that pleasure. And जब भी वो खत्म हो जाए ना, oh, इतनी गर्मी है, काश I could have some more. That we linger in that pain of that not being there. And then you'll immediately search after 5-10 minutes what to do. Is the fan on? Or if people are accustomed to AC, is the AC on? Or clothes are sticking, let me change. For people who want to do, let me go and take a bath. And कोई बात करने को मिल गया तो हाँ कितनी गर्मी है, सब कपड़े चिपक रहे, ये है वो है. It all started with you were out in the heat. All your eyes, ears, skin and all can see all that and feel that. But after that also, all this follows. So this is our attachment to pain. And for the celestials and for the lower beings, they just look for solution to the pain, immediate, quick solution.
But for the human beings, we are rajasic. We are supposed to keep changing, but we want to linger in the pain because that pleasure is, we are more attached to that pleasure. So the attachment is, it takes over, it is more dominant than the need to be done with the pain. That's why awareness. So one way I feel we should put the homework. Do you, what, first observe, do you have pain? And are you attached to the pain or not? If somebody says, oh yes, I'm attached, then the immediate question could be, are you aware that you are in pain in the first place? When we are in an argument and बाद में हम कोई और किसी को फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, मेरा दिमाग ये हो गया, we don't want to see that, oh, that awareness is not there. It's the most difficult thing in the world to leave the attachment. And before leaving attachment, awareness has to come. Ma'am, that was what was there last time का homework में. तुष्टि जो है उसका पहला 4 तुष्टि ऑब्जर्व करने का होमवर्क दिया था, बिकॉज आई फेल्ट उसके बाद जो बाकी के 5 तुष्टि हैं वो सब वैराग्य हैं. 5 kinds of वैराग्य given in the book only. तो वो they would have gotten confused करके नहीं दिया था. But it is actually, no wonder these karikas are coming after that. No wonder. This actually is the result of this. The being in the pain is tushti. अगर aware हुए, that means हम human हुए, then take the step to make it bring something sattvic and then थोड़ा आगे बढ़े. This is our condition. Happy isn't it a form of addiction? You know, you have ice cream once, the taste is the same, whether you have it once or 10 times. But then you don't want to come out of that experience. You repeatedly tend to have more of it or an excess of it. Repeated. Okay. Actually, ma'am, most of the people who turn to yoga, either in the physical form or whatever, इवन योगा इंस्टीट्यूट में भी काफी सारे जो मेरे भी बैचमेट्स थे और जिन जिन लोगों से मैं बात किया, all of them came to the institute because there was a painful point at some point in their life. Absolutely. किसी को कोई हेल्थ का पेन आया, किसी को जॉब में, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस वैसा ही था. सो भोग और अपवर्ग, वरना योगा इंस्टीट्यूट में तो सांता मेरे क्रूज जैसे के बहुत सब लोग कम आने मिलते हैं. चाहिए. हाँ, आपके जैसे बहुत कम है. यस मैम, आपके जैसे बहुत कम है. एब्सोल्युटली राइट. है इक्के दुक्के. I'm not absolutely unique. ऐसे इसको लग रहा है. There the pain was of a different kind also, but ये Yeah. मालूम नहीं है क्या है, ये जानना है. The pain of ignorance. ये हम लोग हमेशा बोलते थे कि सांता क्रूज में जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, आजू बाजू वाले लोग कितने लकी हैं. 4 कदम पे इंस्टीट्यूट है उनकी, बट दैट डजंट मीन कि वो लोग सब इंस्टीट्यूट आते हैं. Dr. Shetty is a great example. हाँ, कभी एक बार एक मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ. एक बार मैं आई वाज एक्चुअली जस्ट पीछे के साइड में सब वो बिफोर ये 5-6 साल के पहले ये सब ग्रीन लैंडस्केपिंग सब किया ना, उसके पहले एक बार मैं ऐसे राउंड सब ले रहा था. हंसा जी had asked me to check the vastu of all that, and I had actually advised a few things which they did retain,
लाइक दैट ट्री, कैलाशपति ट्री जो है, उसका महत्व क्या है, उसको क्यों रखना है, वो एरिया को डिस्टर्ब नहीं करना है. फ्रॉम दैट ओनली केम the idea of that gazebo. Otherwise, they were going to make all changes over there. And I said, at no cost should this place be covered up because already you're having kitchen in this side. And I said, एक पाथ जैसा पूरा घूमना चाहिए जो पूरा कर नहीं पाए बट पीछे का थोड़ा ओपन रख दिया इवेंचुअली. तो व्हेन आई वाज डूइंग दोस राउंड्स एट दैट टाइम, वो बाजू में वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, नेक्स्ट टू द इंस्टीट्यूट वो रोड है ना मैम, राइट साइड में अपना, अभी जो बुक शॉप है उसके राइट साइड में वहां पे. तो अभी भी खेलते हैं वो लोग, बच्चे लोग हमेशा खेलते हैं. उस टाइम में ऐसा मार मार के, सिक्सर मार के पूरा इंस्टीट्यूट में ही बार बार बॉल आता था, पिजन्स को भी लगता था, ऊपर आता था. वी वुडंट हियर इट बिकॉज ऑफ साइड के बिल्डिंग में लग के बाहर जाता था, नहीं तो इधर अंदर आता था. तो मैं जाके एक बार ऐसे आया, इट ऑलमोस्ट हिट माय फेस. ऐसे मैंने सर टर्न किया बट इट हिट ऐसे एंड द बॉल वेंट. स्पेक्स को नॉक नहीं किया. मैं बॉल को लेके मैं जाके वहां पे खड़ा that यहाँ पे there are a lot of people who come here and old people who walk. So the way you hit, if something happens, then anybody can have an injury. So there were some of the bigger boys and some young men who must be in the 30s, 35 तक भी खेल रहे थे. The children were listening, but all the elder ones started arguing with me, thinking I'm going to say much more and not give the ball and all. They all live in that road, all the few buildings there, na, वो side वाले road में. Many of them have even come inside and had एक दो कैंप में आए हैं बच्चे लोग के टाइम में, वो इसमें आए क्योंकि डॉक्टर के टाइम में तो इनवाइट करते थे. तो ये लोग आए हुए हैं. दे नो व्हाट हैपेंस, दे नो इट इज योगा इंस्टीट्यूट, दे नो दैट इधर मेडिटेशन होता है, ओपन में है, लोग चल रहे होते हैं. एंड दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग. एंड आई रिमेम्बर थिंकिंग एट दैट टाइम, इट इज सो मच नेक्स्ट टू द योगा इंस्टीट्यूट. एंड आई रिमेम्बर दैट डे, तो मैं वहां पे पीछे मेरा ये वो सब इन्वेस्टिगेशन सब करके, शाम को हंसा माँ आती है ना टू टेक अ वॉक. So I took that, I strolled, she saw me and I took a stroll with her. She has seen me talking to them from her window by chance. And she asked me, what were you speaking? ऐसे. तो मैंने बोला ऐसे ऐसे. So she was like almost going to say that, no, don't tell them anything. I only of my own, I said, हाँ Hansa ji, I realized that they are not, so I just said that there are older people walking, so we will not be careful करके मैंने बॉल दे दिया. So she noted. He said they have been there even before when the wall was not there and there was only that wire and all. And I said, yeah, I remember that. And so even abhi, when Surabhi abhi, when you were saying na that इतने लोग पास में रहते हैं, that is immaterial. The pain is always within. The Adidevic and Adi Bhautik always boils down to आध्यात्मिक. हम लोग जब भी पहला वाला वो जब भी सूत्र आएगा तभी करते हैं ना, उसमें हम लोग कितना we always say. So Yeah, same over here. It is at the end of the day mental, inside. And when that we very stubbornly, we don't want to be aware of that. Why? It is this attachment to the pleasure. That yes, what I'm doing is right, what I'm feeling is right, what I'm thinking is right, what I'm saying is right. mm, So for those boys and those men who were playing that cricket, all this was true, and they were holding on. So up. So here we have a chance to show in the Karika that ऐसे ही world में we all are attached and we will feel this. But can we become aware of the pain by adopting some sattvic technique? Ma'am? Okay, enough for today. mm.
अरे हाँ तो बोलो. हाँ मैम. Bye. Ma'am, are you back? Yeah.